So hello everyone. So at this class also I am going to continue the topic inverse trigonometric function. So let us discuss the first question. Today's first question is, if tan inverse of x minus 2 by x minus 4 plus tan inverse of x plus 2 by x plus 4 is equal to pi by 4, then find the value of x. ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. समटाइम्स दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन लाइक दिस ऑल्सो, solve for x. Okay, question is same only, tan inverse of x minus 2 by x minus 4 plus tan inverse of x plus 2 by x plus 4 is equal to pi by 4. Then what is the value of x? अच्छा, तो इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू मिलेगा. यस, बिकॉज इन दिस इक्वेशन देयर इज वन अननोन टर्म, दैट इज x ओनली. ओके, if you solve this equation then only you will get the value of this unknown quantity. Yes, so how to solve? In the last class also I have used the formula, that is tan inverse x plus tan inverse y, right? So here also you have to use the same formula, tan inverse x plus tan inverse y. Let us consider this term be x and this one is be y. Okay, so what is the formula of tan inverse x plus tan inverse y? We all know tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. Okay, tan inverse of x plus tan inverse of x plus y by 1 minus xy. This is equal to pi by 4, which is given in the question. Okay, now if tan inverse of x is equal to theta, therefore we can write x is equal to tan theta. Yes, मतलब ये tan inverse को मैं अगर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan pi by 4. So now we can write, if you take LCM of this part, it will be x minus 2 into x plus 4 plus x plus 2 into x minus 4 divided by, this will be x square minus 16 into x square minus 4, which is equal to 10 pi by 4, and we all know the value of tan 45 degree is 1. Okay, so expand the numerator as well as the denominator. So if I expand the numerator, what we'll get? X square plus 4x minus 2x minus 8 plus x square minus 4x plus 2x minus 8 divided by x square into x square, that is x power 4 minus 4x square minus 16x square plus 64, which is equal to 1. So x square plus x square is 2x square plus 4x minus 4x will be cancelled, minus 2x plus 2x will be cancelled, minus 16. This is equal to x to the power 4. If I cross multiply, we will get x power 4 minus 4x square. Sorry, this will be minus 20x square plus 64. So therefore we can write it as minus x power 4 plus 22x square minus 80 is equal to 0. Or we can write, if I take minus common, x power 4 minus 22x square plus 80 is equal to 0. Okay, so इसको अभी सॉल्व करने से जो वैल्यू मिलेगा, that will be the value of x. So if you want to check whether it is correct or not, here x power 4 minus x minus 4 into x plus 4. If I take LCM, this will be x plus 4. Here it will be x minus 4. And now you can ask, what about the denominator part? Already I have cancelled, because x minus 4, x plus 4. Here also in the denominator we get x minus 4 into x plus 4. It will be easily cancelled out. So x minus 4 into x plus 4 is x square minus 4 square, that is 16, minus, sorry, this will be minus, here minus sign is there, right? minus
x square minus 4. So this will be, I think x square will be cancelled. Minus 16 minus minus plus 4, that is 2x square minus 16, which is equal to minus 16 plus 4, that is minus 12, or we can write it as 2x square is equal to minus 12 plus 16, that is 4. Therefore x is equal to plus minus of root 2. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, बिकॉज हियर माइनस साइन इज देयर. आई हैव नॉट गिवन माइनस साइन प्रीवियसली, सो दैट्स व्हाई आई गॉट x to the power 4. Okay, but it should not be x to the power 4. Here 2x square is equal to 4, therefore x is equal to plus minus of root 2. Quadratic term मिलेगा. Okay, quadratic term मिलेगा. So this is the final answer. So like this only you have to solve this type of question. Okay, so apply tan inverse x plus tan inverse y formula. We know tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse of x plus y by 1 minus xy, which is equal to pi by 4. Already it is given in the question. अभी इसके बाद क्या क्या नेक्स्ट स्टेप में ये tan inverse को राइट हैंड साइड में लेके गया, which will be tan pi by 4, and we all know the value of tan pi by 4 is 1, that is tan 45 degrees 1. And after that expand the numerator as well as the denominator. Just you simplify the left hand side part. After simplification you just cross multiply it, and after cross multiplication you will get the value of the unknown quantity, that is the value of x. Okay, so this is the first question. The next question I will discuss now. So next question is, prove that 2 tan inverse of 1 by 5 plus sec inverse of 5 root 2 by 7 plus 2 tan inverse of 1 by 8 is equal to pi by 4. तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में कितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है. There are 3 inverse trigonometric functions, right? One is 2 tan inverse of 1 by 5. Next one is sec inverse of 5 root 2 by 7. And then the third one is 2 tan inverse of 1 by 8. Now, among these 3, दोनों में सिमिलरिटी है. मतलब यहाँ पे 2 tan inverse टर्म है, लेकिन एक सिर्फ sec inverse में है. Yes or not? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो sec inverse है, ये sec inverse को भी tan inverse में कन्वर्ट करना है. Then only it will be easy to solve this question, right? So see how to solve this question. Take the left hand side part. Now अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 एक्सप्रेशन है उसमें से दो सिमिलरिटी है, वो पहले सॉल्व करना है. दैट मीन्स टेक 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. इफ यू टेक 2 कॉमन, दिस विल बी tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 8, yes, plus sec inverse of 5 root 2 by 7. ठीक है, तीनों में 2 सिमिलरिटी है, एक सिर्फ sec inverse में है. वो sec inverse को भी tan inverse में लेके आना है. I will convert it. I will explain how to convert. Now here you have to use tan inverse x plus tan inverse y formula. Just in the last question also I have used the same formula. You have to use here also. So tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus x into y. Yes or not? Plus. Now how to convert this sec inverse of 5 root 2 by 7 into tan inverse? Let's see. Let sec inverse of x is equal to theta. If I consider sec inverse of x is equal to theta, therefore easily we can say sec theta is equal to x. Yes or not? If sec theta is equal to x, therefore tan theta क्या हो जाएगा? What is the relation between sec and tan? Sec square theta is equal to, we know sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Yes. So therefore tan theta is equal to क्या हो जाएगा? Sec square theta. Tan square theta is equal to, we know sec square theta minus 1, or we can write tan theta is equal to under root sec square theta minus 1, or theta is equal to tan inverse of under root sec square theta minus 1. Okay, what is theta? We have considered theta is sec inverse of x, and here sec inverse of x is there. Okay, so if you want to convert sec inverse of x
in terms of tan inverse, what you have to write? Tan inverse of under root sec square theta minus 1. Okay, tan inverse of under root sec square theta minus 1. By using this result only, you can convert this sec inverse of theta into tan inverse. Okay, so sec inverse of this one, how can we replace it? That is tan inverse of अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा का मतलब ये टर्म ही है, दैट मीन्स 5√2/7 होल स्क्वायर माइनस 1. ओके, 5√2 बिकॉज sec थीटा, तो ये हो जाएगा पूरा थीटा का वैल्यू. सो 5√2/7 होल स्क्वायर माइनस 1. ओके, how I have converted this sec inverse into tan inverse, this is the explanation part. If you want to write this one, you can write it also. Okay, so that is 2 into, now tan inverse of, simplify it, this will be 13/40 divided by 40 minus 1, that means 39/40 plus tan inverse of, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50/49 minus 1. Okay, so that is 2 into tan inverse of 13/39, that is 1/3 plus tan inverse of, ये क्या हो जाएगा, 1/7. Yes, now can we apply again tan inverse x plus tan inverse y formula? No, because here 2 is there, right? So now you have to convert these 2 tan inverse x into tan inverse x. Now what is the formula of 2 tan inverse x in terms of tan? 2 tan inverse x in terms of tan is tan inverse of twice x by 1 minus x square. Okay, 2 tan inverse x का formula है tan inverse of twice x, that is 2 into 1/3, here x is 1/3, by 1 minus x square, that is 1 minus 1/9. Okay, plus tan inverse of 1/7. So this is equal to tan inverse of 2/3 divided by 9 minus 1, that is 8/9, plus tan inverse of 1/7. So that is tan inverse of 2/3 into 9/8 plus tan inverse of 1/7. So this is equal to tan inverse of, now 2/3 into 9/8. So this will be tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 1/7. Now you can apply the formula of tan inverse x plus tan inverse y. So again, if I apply the formula of tan inverse x plus tan inverse y, so what will happen, you see, tan inverse of x plus y 3/4 plus 1/7 by 1 minus 3/4 into 1/7. So that is tan inverse of 3/4, that is 28, 21, 25 divided by 25. So tan inverse of 25/25, that means tan inverse of 1. And what's the value of tan inverse 1? We all know tan inverse 1 is equal to pi/4. This is right hand side part. Yes, because we can replace this 1 by tan 45 degree. So tan inverse of tan 45 degree is equal to 45 degree only. So in this way you have to solve this type of question. क्या किया मैं यहाँ पे, पहले tan inverse को एक साथ अरेंज कर लिया, उसके बाद sec inverse को tan inverse में कन्वर्ट कर लिया. If you not convert the sec inverse into tan inverse, तो फिर ये ग्रुपिजेशन नहीं होगा. मतलब एक साथ
टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बट वी डोंट नो टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स वाई, राइट? सो इसीलिए सेक इनवर्स को टेन में कन्वर्ट करना है. इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा, देन यू कैन राइट easily convert the sec inverse x into tan inverse also. Okay, so this is the second question. Some more models I will discuss. So let us take the next question. Prove that cot inverse of under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x divided by under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x is equal to x by 2. ठीक है, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंस क्या है. लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, whereas in right hand side there is neither inverse trigonometric function nor trigonometric function, right? On right hand side only x by 2 is there. तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, try to eliminate that inverse trigonometric function because on right hand side there is no inverse trigonometric function. ठीक है, तो बाहर में लेफ्ट हैंड साइड का बाहर में जो कॉट इनवर्स है, तो इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, कैसा फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कॉट में होना चाहिए. देन ओनली वी कैन एलिमिनेट कॉट इनवर्स एंड कॉट, राइट? सो हाउ कैन we write or we can convert this expression in terms of cot? Let us see. Take the left hand side part. This is our left hand side part. You have to prove is equal to x by 2. तो ये मैं रफ कर दिया. यहाँ पे एक शॉर्टकट टेक्निक है. You see this question you can solve in two ways. Either in rationalization method, or if you know the trigonometric formula, you can apply trigonometric formula also. So here I am going to use a trigonometric formula. Okay, so 1 plus sin x का trigonometric formula क्या होगा? We know, or we can write 1 plus sin x is equal to cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus this sin x can be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2. Yes or not? 1 can be replaced by cos square theta plus sin square theta, and this sin x, we know multiples are multiple angle formula. If sin twice x is 2 sin x into cos x, then sin x can be replaced by 2 sin x by 2 into cos x by 2. Okay, so क्या formula use करना है यहाँ पे, a square plus b square plus twice ab, that means a plus b whole square. Yes or not? That means 1 plus sin x is equal to cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. Therefore, which implies we can write under root 1 plus sin x is equal to cos x by 2 plus sin x by 2. Yes? So now we can replace this under root 1 plus sin x by cos x by 2 plus sin x by 2. So if I can replace this under root 1 plus sin x by cos x by 2 plus sin x by 2, therefore easily we can say that under root 1 minus sin x can be replaced by cos x by 2 minus sin x by 2. Okay, so therefore now we can write cot inverse of, replace all these expression, that is under root 1 plus sin x can be replaced by cos x by 2 plus sin x by 2 minus, sorry, here plus sign is there, so plus under root 1 minus sin x can be replaced by cos x by 2 minus sin x by 2 divided by, again under root 1 plus sin x can be replaced by cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 minus minus, this will become plus sin x by 2. Okay, now plus sin x by 2 minus sin x by 2 plus cos x by 2 minus cos x by 2 will be cancelled. So that is cot inverse of, now cos x by 2 plus cos x by 2 is 2 cos x by 2 by 2 sin x by 2. 2 will be cancelled. Now cos theta by sin theta, we all know cot theta. So that is cot x by 2. Now you can check cot inverse of cot x by 2. This is equal to only x by 2, which is the right hand side part. See, very simple question. Just for this you should know the tricks.
Okay, this question can be solved in two ways. This one is one method. You can use the trigonometric formula if you know. Otherwise, you can go for rationalization. Okay, rationalization तो सबको पता है. So trigonometric formula use करके solve करने से बेहतर है, क्योंकि entrance में तो formula याद रख सकते हैं. ठीक है. So in this way we can solve this question. Okay. Next question I will discuss now. So the next question is, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse of z is equal to pi, then show that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1. ठीक है. Important question है ये. That's a long question है. So let us see how to solve. So since here 3 terms are given, so this one can be written as cos inverse x plus cos inverse of y is equal to, we can write it as pi minus cos inverse z. Yes. Now, if you know the direct formula of cos inverse x plus cos inverse y, then it is very easy. Otherwise, you can assume cos inverse x is equal to say theta and cos inverse of y is equal to say phi. So if cos inverse x is equal to theta, therefore we can write cos theta is equal to x. If cos inverse of y is equal to phi, therefore cos phi is equal to y we can write. Okay. Now, what's the formula of cos of a plus b? That means cos of theta plus phi. We all know cos of theta plus phi is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Yes. So what is cos theta? We can replace cos theta by x. What is cos phi? We can replace cos phi by y minus sin theta. If cos theta is equal to x, therefore sin theta means under root 1 minus x square. Yes or not? If cos phi is equal to y, then sin phi can be written as under root 1 minus y square. So therefore we can write theta plus phi is equal to, ये cos को right hand side में लेके जाने से ये हो जाएगा cos inverse. So cos inverse of xy minus under root 1 minus x square into 1 minus y square. Okay. Now the question is, you can ask why I am using the formula of cos of theta plus phi. Why not cos of a minus b? Because जो दिया हुआ है टर्म उसमें साइन क्या है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें साइन प्लस दिया हुआ, इसीलिए cos of a plus b का फॉर्मूला यूज किया गया है यहाँ पे. ओके. So now if you replace this theta by cos inverse of x, that means cos inverse x plus cos inverse of y, which is equal to cos inverse of xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. Okay. So this is the equation number 1. Now I can replace the left hand side of equation 1 by cos inverse of xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. This is equal to pi minus cos inverse z. Yes or not? We can replace the left hand side part because now we know the formula of cos inverse x plus cos inverse y. इसीलिए मैं बोला था अगर cos inverse x plus cos inverse y का formula direct पता है तो you can directly put this value. Okay. So I have explained this part. Okay, so cos inverse of x into y minus under root 1 minus x square into 1 minus y square is equal to this one. Therefore, xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square, this is equal to, ये cos inverse को फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाने से ये क्या हो जाएगा, cos of pi minus cos inverse of z. Okay. Now this is cos 180 minus theta. So what is cos of 180 minus theta? Cos of 180 minus theta is equal to minus of cos theta. That means minus cos theta. Here theta is cos inverse of z. Okay. Now cos of cos inverse z. This is equal to z only. But before that here minus sign is there. So you have to use this sign. Okay. So therefore we can write it as xy. ये minus z को अगर right hand side से left hand side में लेके आना है तो plus z हो जाएगा. और ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाने से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टर्म्स देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड.
सो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, रूट ओवर हट जाएगा तो रहेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. सो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, this is equal to 1 minus y square minus x square minus this will become plus x square y square. So x square y square will be cancelled. So therefore we can write x square plus y square plus z square plus 2xyz, this is equal to 1. Hence proved. Okay, this is important question. कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके गया. आफ्टर दैट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y. इफ यू नो द डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन पुट डायरेक्टली, अदरवाइज यू हैव टू शो दीज स्टेप्स. ओके, सो आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, then just you simplify it, then squaring on both sides you'll get the required term. Okay, so next question I'll discuss now. Take the next question. If cos inverse of x by a plus cos inverse of y by b is equal to theta, then prove that x square by a square minus 2xy by ab cos theta plus y square by b square, which is equal to sin square theta. This is also important question. It is also long question. So cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equal to theta. This can be written as cos inverse of x by a is equal to theta minus cos inverse of y by b, okay, which implies x by a is equal to cos of theta minus cos inverse of y by b also we can write. Yes, now apply the formula of cos of a minus b on right hand side. What is cos of a minus b? Cos a into cos b plus sin a into sin b, that is sin theta into sin of cos inverse of y by b. Okay, I have used the formula of cos of a minus b. So this is equal to cos theta into cos of cos inverse of y by b is y by b only plus sin theta into, now sin of cos inverse of y by b is not possible to eliminate, right? So यहाँ पे बाहर में साइन फंक्शन है, अंदर में cos इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अंदर में जो साइन इनवर्स है अंदर में जो cos इनवर्स है इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस cos इनवर्स इनटू साइन इनवर्स? लाइक sec थीटा को जो मैं tan में कन्वर्ट किया था, दैट मींस sec इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था. सिमिलरली हियर आल्सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट cos इनवर्स, से cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर cos theta is equal to x, yes or not? So which implies sin theta is equal to क्या हो जाएगा, under root 1 minus x square हो जाएगा. That means theta is sin inverse of under root 1 minus x square. Okay, what is theta? Theta is nothing but cos inverse x, this cos inverse x. Okay, so how can we replace, how can we convert this cos inverse into sin inverse? By using this formula, that is sin inverse of under root 1 minus x square. Here x is y by b, that means y square by b square. Okay, so therefore x by a minus y by b into cos theta, which is equal to sin theta. This sin theta, now sin inverse, sin inverse of this one, that means this is under root 1 minus y square by b square only. Okay, now squaring on both sides. स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा बिकॉज जो प्रूफ करना है उसमें सब में स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बाय ए बी इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर plus y square by b square into cos square theta. Now if I expand it, this will be sin square
this sin square theta minus y square by b square into sin square theta. तो ये जो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने से क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बाई ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. ये टर्म को मैं क्यों लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, सो दैट वी कैन अप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy by ab into cos theta plus if I take y square by b square common, तो फिर cos square theta plus sin square theta will be 1, so it will be y square by b square only. This is equal to sin square theta. Hence proved. Question बहुत easy है लेकिन important question है, ठीक है. Like this only you have to solve. cos इनवर्स ऑफ x बाई ए को लेफ्ट हैंड साइड में रख के सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड में लेके गया. इसके बाद जो x cos इनवर्स ऑफ x बाई ए है, इसमें से cos इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके आया, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी. अप्लाई cos ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b. आफ्टर दैट जस्ट यू सिंप्लीफाई इट. Before simplification, you have to check, can you eliminate? No, we cannot eliminate this one. That's why you have to convert this cos inverse x into sin inverse. So how can we convert? By using this result. Okay? So इसके बाद eliminate करने के बाद सिर्फ squaring किया, then interchange किया टर्म को, you will get the final answer. That is x square by a square minus 2xy by ab cos theta plus y square by b square equal to sin square theta. Okay? So in the next class I will discuss some more models. So thank you for today.